A very warm welcome to all of you present over here, respected guests, leaders, and my dear friends. So, myself Sangamitra Gautam from Southeastern Railway from Eastern Region. With me, Tejashwini is there from East Coast Railway. We are here on the occasion of national level webinar on advocacy champion and seat trainers for hero level tie turners plastic challenge. Today is the second day of our program. Before starting our program, we should start with prayer, that is BSG prayer. So now I would like to request all of you, please stand at your own place and for BSG prayer, please. दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ज्ञान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, सेवक चल बना देना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। Thank you, everyone. Now I would like to request everyone, please take your own seat. We are being choked to death by the amount of plastic that we throw away. It's killing our oceans. It's entering into our bodies in fish we eat. So now it's a time for presentation by participants. So now at first, I would like to request room number 1, please present your presentation. After that, get ready, room number 2. Room number 1, please present your presentation. Prajita, unmute yourself. Yes, sir. Sir, you will share or I can share my PPT. So, hello, good morning, one and all. Myself, Uparajita Banike, Rajya Purushkar Ranger from NF Railway. Today, I am present our advocacy and community action plan. So, as per starting point, we have to determine that what is our strength, means हम लोग का जो strength वो recognize करना था. तो हम लोगों ने जो हमारा strength लिया है, as a scout guide, the main strength we have, that is our courage, means to motivate people. We need our courage. Then the most important is teamwork. If we need to improve anything or if we need a change in our surrounds, we have to work as a team. Next is creativity, means being creative in ourselves and to influence others to being creative, means to avoid the use of plastic and also to being use alternatives. Then the hard work, yes, we definitely need hard work because plastics are now in everywhere. So we need to hard work on that. Next one is leadership.
we need to have a leadership quality in ourselves, and then we have to passionate that we do that point that we have to reduce the use of plastic. That is our starting point, and that is the strength we recognize in ourselves. Next slide, please. हाँ, नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू नीड टू इम्प्रूव, मतलब हम लोगों ने वो रिकॉग्नाइज किया जो हम लोग को इम्प्रूव करना था। तो उसके लिए हम लोगों ने जो जो टॉपिक चूज किया है कि हम लोग जो बीइंग वोकल अराउंड द लोकल मीन्स, हम लोग को अगर कुछ इन्फ्लुएंस करना है तो हम लोग को पहले अपना जो सराउंड है उन लोगों को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड आवर कम्युनिकेशन एंड कनेक्ट विथ मोर पीपल। हम लोग को अगर कुछ चेंज चाहिए तो हम लोग को पहले लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर हम लोग उनसे जुड़ नहीं पाए तो हम लोग वो नहीं जान पाएंगे कि हम लोग को कैसे उन लोग को समझाना है, उन लोग को ऑल्टरनेटिव देना है। वो हम लोग को इम्प्रूव करना पड़ेगा, मतलब हम लोग को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा और उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना होगा। Next slide, please, sir. Next one is root causes of the problem. तो हम लोगों ने कुछ root causes निकाले हैं जो हम लोगों को मतलब उसके ऊपर वर्क करना है। So first one is lack of awareness. Definitely लोगों को लोग अभी अवेयर नहीं है कि हम लोग अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा प्लास्टिक इधर उधर सब जगह मिलेगा। नेक्स्ट वन इज सिंगल यूज प्लास्टिक। हम लोग जो प्लास्टिक यूज करते हैं वो हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं, जैसे कि प्लास्टिक स्ट्रॉज, बोतल्स। उन लोगों की जगह हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, हम लोग वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज चेंज इन आवर सेल्फ। इफ वी चेंज आवर सेल्फ देन वी हैव टू मीन्स deput or we have to influence others to do the same. नेक्स्ट वन इज lack of specificity एंड देन नेक्स्ट वन इज पैक्ड फूड। जो हम लोग को फूड मिलता है वो ज्यादातर पैक्ड होता है, जैसे एक पैकेट मिला वो हम लोग ऐसे ही छोटा छोटा पैकेट का टुकड़ा अगर हम लोग इधर उधर फेंक देंगे तो उससे भी प्लास्टिक पोल्यूशन होता है। तो मीन्स कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि एक बेंगलुरु की शायद लेडी थी, वो उन्होंने क्या किया कि मिल्क का जो पैकेट है उसके छोटे छोटे टुकड़े को फेंकने की वजह उन्होंने किया कि वो काटा ही नहीं। तो हम लोग अगर छोटी छोटी कोशिश करते रहे तो हम लोग वो मतलब प्लास्टिक पोल्यूशन को होने से बचा सकते। तो वही हमारा रूट को मतलब कॉज होगा प्रॉब्लम का जो इधर है। नेक्स्ट वन इज इश्यूज ऑफ द प्रॉब्लम। जो हम लोगों का इशू हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, पहले है प्लास्टिक वेस्ट। जो प्लास्टिक हम लोग वेस्ट है वो ठीक से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, वो पहला इशू। फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, एज प्लास्टिक is not a biodegradable material, so we are using a non biodegradable material in spite of having various biodegradable materials. That is the main issue. Next, agency corporation as agency are not working at well to reduce the use of plastic completely. Next is lack of global citizenship and lack of cooperation with government, as government doesn't take the proper step to reduce the use of plastic. That is the issue of the problem. Next slide, please. हाँ, फिर सर उसके पहले शायद गोल। हाँ, तो हमारा गोल है कंप्लीट बैन ऑफ प्लास्टिक। हम लोग को जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो कंप्लीटली बैन करना होगा और उसका यूज कंप्लीटली बंद करना होगा या रिड्यूस करना होगा। टू मेक वर्ल्ड विथ नो प्लास्टिक, दैट इज द मेन मोटिव ऑफ आवर सेल्फ। दैट इज वी मे हैव टू मेक ए बेटर वर्ल्ड विथ
no plastic, and involve everyone in our work. If we need to change in our surround in the community, we need to involve more people. So that is the main goal of ourselves. Then the smart objective to achieve the goal. First one, we have to choose reach among community, as we already mentioned that we have to need more people. We have to means associate with community. So the first point we that come to our mind is to reach among community. Then work with local municipality. हम लोग को अगर चेंज हमारे लोकल में चाहिए तो हम लोग को उनके साथ ही काम करना पड़ेगा. और ऑर्गेनाइज कैंपिंग टू अवेयर और एजुकेट पीपल. हम लोग को जो पहले जो काम करना होगा कि हम लोग को लोगों को अवेयर करना होगा. अगर वो अवेयर हो जाए तो वो धीरे धीरे प्लास्टिक का यूज बंद कर सकते हैं. हाँ, तो जैसे मैंने बोला तो उसके लिए हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, प्राइमरी टारगेट ऑडियंस, एज आई वर्किंग इन द आई वर्क इन दिस मीन्स I decided to reduce the use of plastic. So primary audience myself, then the leaders who political leaders as people influenced by them, then the plastic industry and local shopkeeper. That is our primary audience. And the secondary audience are school, colleges and NGO workers and the NGOs that are working to reduce the use of plastic. Next slide sir. ओके, तो हमारा जो कैंपिंग है उसका नाम हम लोगों ने कुछ अलग ही रखा है. Teach one to reach among to reduce the use of plastic. इसका कैंपिंग का मेन मोटिव यही है कि हम लोगों को जुड़े. तो हम लोग ने क्या किया कि हम लोगों ने एक कंप्लीटली चेन बना लिया कि आज मैंने 2 लोगों को बताया कि वो प्लास्टिक का यूज ना करे और उन दोनों को हम लोगों ने ऐसे इन्फ्लुएंस किया कि वो 2 बिल्कुल ना यूज करे और वो 2 और 2 लोगों को इन्फ्लुएंस करे. तो ऐसे क्या होगा, हम लोग का पूरा एक चेन बन जाएगा जो कमिटेड होंगे कि वो प्लास्टिक को यूज ना करे. इसलिए हम लोगों ने अपना कैंपिंग का नाम रखा टीच वन टू रीच अमंग टू टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक. नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, तो एडवोकेसी मेथड में लॉबिंग में हम लिखा अवेयरनेस बाय मेकिंग पोस्टर्स एंड इन्फ्लुएंसेस स्पीच. एज वी नीड टू एडुकेट और अवेयर पीपल, वी मस्ट हैव टू influence people. So for that we need posters and हम लोग को अगर उन लोग को influence करना है तो हम लोग का vocal भी वही होना चाहिए. तो हम लोगों ने influence speech. Next one is camping. As we know the days are going through social media. So पहले digital camping ever through social media. अगर हम लोग social media में मतलब अगर बताते जाए कि वो ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, प्लास्टिक का प्रोहिबिट किया है, तो वो शायद लोगों को इफेक्ट करे और वो ज्यादा नहीं, अगर थोड़ा थोड़ा हम लोग कोशिश करें तो प्लास्टिक का कंप्लीट रिड्यूस हो सकता है. नेक्स्ट वन इज अरेंज प्रैक्टिकल गैदरिंग. तो हम लोगों को लोगों को जुड़ना है, जैसे कि हमारा कैंपिंग वही है लोगों को जुड़ना. तो हम लोगों ने क्या किया कि कैंपिंग में हम लोगों ने अरेंज प्रैक्टिकल गैदरिंग. नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, तो कम्युनिकेशन एक्शन प्लान. प्रॉब्लम स्टेटमेंट. हमारा जो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट वही है कि प्लास्टिक एज वी आर यूजिंग प्लास्टिक. सो by this the field are completely lose their fertilization. प्लास्टिक के यूज की वजह से जो हमारा फील्ड है उनका फर्टिलाइजेशन धीरे धीरे घटता जा रहा है. एंड कॉज ऑफ वेरियस पोल्यूशन वर्क्स एज पोल्यूटेंट. जो हमारा प्लास्टिक है वो पोल्यूटेंट की तरह वर्क कर रहा है. और उसका एविडेंस यही है कि कुछ साल बाद अगर हम देखें तो वो दिन दूर नहीं जब हम लोग को मतलब फिश वगैरह पानी में नहीं दिखेगा, सिर्फ प्लास्टिक और प्लास्टिक ही दिखेगा. नेक्स्ट वन इज द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है वो भी प्लास्टिक की वजह से हो रहा है. एज वेरियस केमिकल्स लाइक मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच आर द मेन कंपोनेंट्स फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, it's a release from the plastic. So that is the main reason that the temperature of our living world day by day increased and increased. So that is the evidence that we are continue. हम लोग को दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट वन इज एक्शन रिक्वायर्ड. हम लोग को क्या क्या एक्शन लेना पड़ेगा.
तो हम लोगों ने एक्शन में वही रखा है कि हम लोगों ने अपना कैंपिंग रखा है टीच वन टू रीच अमंग टू। तो हम लोगों ने क्या किया है, जैसे पॉलीथीन हम अगर मान ले तो पॉलीथीन इज अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ इथेन। तो पॉलीथीन एक हाइड्रोकार्बन चेन है इथेन का, जो एक के साथ एक जुड़ा होता है और उससे हम लोग का पॉलीथीन मेड होता है, जो कलेक्टिवली वर्क करता है। लेकिन प्लास्टिक की वजह से हम लोग को कोई कोई प्लास्टिक से हमें कोई अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, प्लास्टिक का प्रोहिबिट हमें मिल रहा है। तो हम लोग भी अगर प्लास्टिक की तरह अपना एक लॉन्ग चेन बना ले, जो हम लोग एक साथ वर्क करेंगे, तो वो लॉन्ग चेन हम लोग को प्लास्टिक के प्रोहिबिट से बचाएगा। तो वही है कि हम लोग को अपना एक लॉन्ग चेन बनाना है लाइक दैट ऑफ पॉलीथीन। नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव। जितने भी अल्टरनेटिव चीजें हमारे पास है, उन लोगों को हमें यूज करना है ताकि प्लास्टिक का यूज हम लोग घटा सके। और ऐसे करते करते अगर हम लोग जुटते जाए, तो वो हम लोग का जो प्लास्टिक का जो लोगों को जुटते जाए, तो प्लास्टिक का यूज डे टू डे कम हो सकता है। जैसे हम लोगों ने कैंपिंग, जैसे मैंने कैंपिंग का नाम दिया है कि टीच वन टू रीच अमंग टू, वैसे करते करते हम लोगों ने पहले हम लोग 12 लोग थे, अभी हम लोग 112 पार्टिसिपेंट उसमें काम कर रहे हैं। तो वैसे ही हम लोग अगर लोगों को जुटते जाए, तो वो दिन दूर नहीं कि हम लोग प्लास्टिक से बचाव कर सके। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि एज बैन की मून सेड, देयर इज नो प्लेनेट बी, सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक। थैंक यू। Thank you so much, room number 1, for presenting your presentation. It's a lovely presentation that you had shared with us, and we had got lots and lots of information about plastics. So now it's a time for room number 2. So next, get ready, room number 3. Room number 2, please present your presentation. Good morning, everyone. I'm Ritika, Chairperson State Youth Committee, Jammu and Kashmir, and State Master Trainer SOSMART 2.0. I'm Coordinator University. Today, I'm going to present a presentation on behalf of. Sorry, sir, because of network issue, I'm not able to start my video. Can I continue without video? Yes, continue. Thank you, sir. Today, I'm going to present my presentation on the behalf of room number 2 on advocacy plan for 0% plastic use. According to room number 1, she said everything for the advocacy plan. So I just focus on the things what is actually destructs the climate and the environment in each and every perspective, and what we have to do as a citizen of India, especially, and the citizen of a global world. So firstly, I have to discuss what are the strengths we have to use for the advocacy plan to avoid plastic. So firstly, we have to work as a team. If we work as a team, we will achieve our goals. If we are not work as a team, we just do one thing individually, then we are not achieving our target. So is our first point to achieve our goal, achieve our target. So it's a great opportunity if we are working in a team. So another point is shared roles, responsibilities, and leadership. If I talk about roles, responsibilities, and leadership, is like if we distribute our responsibilities, what we have to do, what the other person to do, then it's a very smooth and cordial way to work as a team and achieve our target thing. Then another point is creativity. If I talk about the creativity is not like we have to adapt the idea from the other person or from the advertisements or from the social media or from the other respective channels or the platforms.
Creativity is like whatever we thought, whatever the idea we have. For example, if I have an idea to use old clothes to make a bag, then I have to share that idea with my team and with my people who are working on that advocacy. So whatever the ideas we have, like for example, if some of the team member have a idea to make a uh, earthen cups for the railway stations, then we have to present that in exhibition way of also. So this is also is a part of creativity. So now I will share the main reasons. What are the main reasons to blame plastic pollution for climate change? कौन से ऐसे reasons हैं जो plastic pollution create करते हैं, जो इतना ज्यादा climate change को affect कर रहा है, इतना ज्यादा environment को affect कर रहा है? If we are talking about the plastic pollution not only destructs environment or a climate, it destructs air also, soil also. It creates all type of pollutions in environment. At all, it affects also us. जब कोई भी तरह का पोल्यूशन होता है तो वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर प्लेस को या पर्टिकुलर चीज को इफेक्ट नहीं कर रहा होता, वो हमको भी इफेक्ट कर रहा होता है. लाइक सिमिलरली रूम नंबर 1 ने आपको बताया कि जब हम ओशंस को इफेक्ट करेंगे तो उससे हम फिश को इफेक्ट होगा, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को इफेक्ट होगा. तो उसी तरह से ये सब चीजें होती हैं. इफ आई टॉक अबाउट द रीजन, देन फर्स्ट रीजन इज एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन. Most people do not realize that plastics originate from fossil fuels. In fact, the plastic industry accounts for about 6% of global oil consumption and is expected to reach 20% by 2050. If I talk about the extraction and production, जब आप देखोगे कि प्लास्टिक कहाँ से बनती है, प्लास्टिक क्या क्रिएट करती है, तो एक फॉसिल फ्यूल क्रिएट करती है जो हम एक इस तरह का ऑयल होता है जो हमारी ह्यूमन बॉडी को भी इफेक्ट करती है. और अगर हम इसका एक्सपेक्टेशन और इसका प्रोडक्शन करते जाएंगे तो इसका भी परसेंटेज जो है वो 6% है, उसका रीच 2050 तक 20% हो जाएगा. As a result, due to the energy intensive processes required to extract and distill oil, the production of plastic generates enormous amounts of greenhouse gas. Now, another point is consumption. Most people think that when plastic is discarded in recycling bins, it goes away. But there is no way. Only 9% is recycled globally, and the rest is dumped in the natural environment. Then, end of life. When not recycled or disposed of in a controlled manner, discarded plastic waste generates greenhouse gases emissions when exposed to solar radiation both in air and water. Recycling and closing the loop. Even though recycling could significantly reduce the impact of plastic pollution on the environment and its contribution to climate change, only 5% of total waste generated is recycled. If I talk about the marine litter, a garbage truck equivalent of plastic waste is dumped in the ocean every minute. Marine plastic pollution breaks down into microplastics and contributes to climate change both through direct greenhouse gas emissions and indirectly by negatively affecting ocean organisms. If I talk about open burning is like कि जो हम खुले में आग लगा देते हैं, हम कहीं पर भी कचरे को डंप करते हैं और वहीं पर आग लगाते हैं. That also creates and affects us also as to the environment also. Open burning is a common waste treatment practice around the world. The amount of waste burned in India and Nepal combined accounts for 8.4% of waste burned globally. Burning waste in open fires leads to the production of a serious air pollutant, black carbon, and is responsible for half of the visible smoke in places. The global warming potential of black carbon is up to 5,000 times greater than that of carbon dioxide. These are the reasons which affect climate. Now I'll talk about what is the impact to mismanaged plastic. The impacts of mismanaged plastic waste on the climate as well as on the livelihoods and ecosystems are an urgent development challenge.
Firstly, to solve this problem, targeted innovative circular economy approaches are needed. A circular economy approach starts at the stage of product design and selection of raw materials with aim to develop products that are optimized for use, creating renewable resources and minimizing the need for both the final disposal of waste and mining of materials. Now I have discussed problems or issues on disposal of plastic waste. Plastic pollutes beaches and oceans. Plastic bags litters the landscape. जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि दिन आए हम लोग न्यूज चैनल्स पे देखते हैं कि लैंडस्केप्स हो रही हैं. दैट ऑल्सो क्रिएट्स और अफेक्ट्स बाय द प्लास्टिक, क्योंकि जो प्लास्टिक पॉलिथीन बैग्स होते हैं वो इतने ज्यादा स्लिपरी होते हैं कि जब वो हमारे सॉइल कंजम्पशन में ऐड हो जाते हैं तो वो लैंडस्केप का भी एक कारण बन जाते हैं. प्लास्टिक बैग्स kills animals, affects tourism, affects the health of human. If I talk about New Delhi NCR, लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि एक वहां पर गैस की वजह से, ग्रीन हाउस गैस की वजह से, स्मोक की वजह से लोगों को उसी टाइम पे मास्क पहनना पड़ गए थे इंस्टेड ऑफ कोविड-19, क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह से लोगों का सर्वाइवल मुश्किल हो गया था. फिर उनको प्लांटेशंस लगाना पड़े थे. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट गौतम गंभीर planted a plant there in NCR for clear air for the people. Steps should be taken to recycling of plastic. This is simple steps we already know, but in harsh reality, we are not taking steps, or we are not doing that. We are just doing for the pictures or for the things like कि हाँ हम दिखाने के लिए वो चीज करते हैं, बट हम लोग वो करते नहीं है. जैसे हम लोग दिखा देने के लिए कर देते हैं कि इज अ ग्रीन बॉक्स फॉर सेग्रीगेशन, इज ग्रीन फॉर गीले के लिए है, ये सूखे के लिए है, और ये अदर प्लास्टिक या अदर किसी भी तरह का कचरा है उसके लिए, बट इज नॉट इन एग्जैक्टली वे. तो इज अ वेरी सिंपल स्टेप्स इज सिलेक्शन, सेग्रीगेशन एंड प्रोसेसिंग. जब हम तीनों को डिवाइड कर देते हैं, गीले, सूखे और ड्राई कचरे को, तो उस हिसाब से हम लोग बहुत जल्दी सेग्रीगेट कर पाते हैं कि किस तरह से करना है. व्हाट एक्चुअली नीड्स टू इम्प्रूव इज, हमको क्या ऐसे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है कि हमें एवरीबडी नोज कि क्या हमारी इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है, क्या चीजें पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, बट हमको बहुत चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है. दैट इज अवेयरनेस इन प्रॉपर मैनर. क्योंकि अगर अवेयरनेस एक प्रॉपर मैनर में होगी तो ही हम किसी चीज को अचीव कर सकते हैं. कम्युनिकेशन एंड स्किल्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड. हमको अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना पड़ेगा. हमको जो स्किल्स है, जैसे कि अर्दन कप्स की मैंने बात की, हम लोगों ने पेपर बैग्स की बात की, क्लोथ बैग्स की बात की, अगर हम इन चीजों को एक प्रॉपरली एग्जीबिशन के तौर पर या DIY के तौर पर जब हम लोग ये प्लेटफॉर्म्स के थ्रू दिखाना शुरू कर देंगे या उन लोगों को देना शुरू करेंगे, government has an opportunity. Even as a responsible citizen of India, we have for responsible for these things also. Tackling issues gently, we have to take the issue. For example, अगर हमारे nearby ही एरिया पे कोई ऐसा कचरा पड़ा है, तो हमको वहां से शुरुआत करने के लिए बहुत सॉफ्टली उस इंसान के साथ बात करना पड़ेगा जो यूज कर रहा है या जो वो कचरे को फेंक रहा है वहां पर. इंस्टेड ऑफ फाइटिंग और इंस्टेड ऑफ शाउटिंग ऑन दैट पर्सन, हम लोगों को उसको बहुत जेंटली ट्रीट करना पड़ेगा. जब हम उसको ट्रीट करेंगे तो वो उस चीज पे शायद नेक्स्ट टाइम से अवेयरनेस के बाद वो चीज नहीं करेगा. So that is a connectivity process of improvement. Firstly, we have to connect and engage with that person. Then we have to aware that person, communicate with that, and give ideas for the skills to use the alternative instead of the plastic, and obviously taking issues gently. So now what is the audience targeted by us? Is government officials such as respective cleanliness bodies like municipal corporations, municipal committees. These are the bodies, urban departments are working for these
safety purposes, I can say, for the protection and for the cleanliness purposes. So we have to target them, aware them, giving sessions to their employees, because जो municipal committees के जो employees होते हैं, जो वो काम कर रहे होते हैं, they are not aware of exactly, they dump the things taken from one place to another. So we have to aware them. We have to target the audience of the government officials. Then we have non-profit organizations. We have to take non-profit organizations to take them and engage them with the skills, with the DIY activities, to ask them to help us for the purpose, for the target. They can make the paper bags, cloth bags, earthen cups, straws, many things. तो उस हिसाब से वो भी सोसाइटी में एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं. Then we have cooperative societies. Cooperative societies are like जैसे विमेन्स ने अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई होती हैं, आर्मीज ने छोटी छोटी अपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई होती हैं. तो ये कोई भी बिजनेस कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं. दे हैव टू टेक देयर एक्शन प्लान्स आल्सो. वी हैव टू अवेयर देम आल्सो कि आप ऐसे कुछ एक्शन प्लान्स बनाइए कि अगर कोई भी अपनी कंपनी से या अपनी शॉप से कोई भी कचरा बाहर फेंकता है तो उसको इतना पेनल्टी भरना पड़ेगा. इफ यू अवेयरिंग देम स्पेशली फॉर दिस थिंग्स, तो वो भी वहां से प्लास्टिक और जो हमारा एक्स्ट्रा पोल्यूटेंट मटेरियल्स होते हैं वो कम हो जाएंगे. देन वी हैव टू टारगेट चिल्ड्रन एंड यंगस्टर्स, बिकॉज हम लोग जैसे देखते हैं स्पेशली इन इंडिया. If I talk about India, हम लोग बच्चे देखते हैं, they need a pocket money for daily basis, like 10 rupees, 20 rupees. तो वो लोग क्या करते हैं कि जहां पर जो चीज खाएंगे वो वहीं पर फेंक देंगे. तो मोस्टली चिल्ड्रन एंड यंगस्टर्स यूज प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक पॉली बैग्स, स्मॉल पॉली बैग्स फॉर देयर चिप्स, फॉर देयर अदर थिंग्स. तो हमको वो अवॉइड करवाना पड़ेगा कि अगर आप खा रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट able to stop them for eating the things whatever they like, but we have to make them understand कि आप इस चीज को इस तरह से यूज करोगे और अगर आप यहाँ पर फेंक देते हैं तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है. Then we target markets also. Then we have advocacy methods. First is the campaigning. Of course, campaigning is a very important part in the role in any of the important and the crucial topics. अगर हम किसी भी मुद्दे पे जब हम बात करते हैं, हमको उस बारे में कैंपेन करना, उसके बारे में अवेयर करना बहुत जरूरी होता है. तो उसी तरह से कोई भी आप जब कैंपेन करते हैं, जैसे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल कैंपेन, तो उन्होंने एक ऐसे यूनिक नाम रखे दैट अट्रैक्ट्स टू द पब्लिक एट लार्ज. तो दैट इज ऑल्सो सिमिलर इन आवर प्लान्स ऑल्सो. इफ वी गिव अ टैगलाइन टू that particular campaign in a very attractive way, तो वो अट्रैक्टिव वे जो होता है वो लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है. तो उसी तरह से हमने अपने कैंपेन का नाम रखा है जान है तो जहान है. वो जान है तो जहान है में लोगों को समझ में आएगी कि अगर मैं ये प्लास्टिक का यूज करूंगी तो मेरा लाइफ इफेक्ट हो सकता है. तो उसी तरह से अभी नाउ डेज digital platform plays a very important role and in a very smooth and the very faster way. तो हम डिजिटली कैंपेन भी कर सकते हैं. उसके बाद प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स हम लोग रख सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया. उसके बाद हम लोग इनको इस ऐसे स्किल्स सिखा सकते हैं जिससे हम जीरो यूज प्लास्टिक किस तरह से कर सकते हैं. जैसे हम लोग अर्दन यूटेंसिल्स यूज कर सकते हैं, पॉट्स यूज कर सकते हैं, अर्दन कप्स यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक बैग, पेपर ऑल्टरनेटिव जब हम यूज करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगा कहीं ना कहीं. वी डिड लिटिल बिट फॉर द सोसाइटी. और इन द एंड लॉबिंग, अगर हम लोग किसी भी टॉपिक को लेके किसी भी चर्चा करते हैं या किसी भी इशू पे काम करते हैं तो हमको लॉबिंग की बहुत जरूरत होती है. इट्स ऑल अबाउट द कम्युनिटी action plan, but we have a citizen of India. We are firstly an individual person.
So it's our responsibility and duty of every citizen to protect climate. It's not a responsibility of the government. It's not a responsibility of the NGOs, cooperative societies and others. It's a responsibility of us also. को बता देना एक अच्छा कौशल का एग्जाम्पल है। श्रवण शक्ति बुलाया था उसका बहुत बढ़िया है, ठीक है। श्रवण का जो प्रकार होता है यानी लिसनिंग का जो स्किल का प्रकार होता है वो उसको 4 भाग में। Thank you so much, Ritika, for such a lovely presentation. I have to discuss one thing, but I have to discuss because of the noise. I'm not able to hear. Okay, no problem. Duty and responsibilities of every. Thank you. Duty and responsibilities of every citizen to protect climate and try to protect environment because of zero plastic use. It's a very simple point. If we do in our daily life, then we somewhere as individuals we protect ourselves also and environment also. Carry reusable bags. Give up bottled waters like plastic bottles. Avoid plastic bottles. Carry your own containers for takeout food and leftovers. Carry a stainless steel travel mug or water bottle at all times for drinking purposes while out in the world. Carry reusable utensils and glass drinking straws. Shop your local farmer markets. Shop your local farmers market से मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर हम local products खरीदते हैं तो we supported the local things also, and we get organic things instead of plastic added things or affected things. Just for example, if we are talking about chips. Okay, thank you, Ritika. Due to shortage of time, thank you, sir. We have more presenter. Okay. Thank you so much, Ritika, for such a lovely and wonderful interaction you had shared. Now it's the time for room number 3. Next, get ready, room number 4. Room number 3, it's your time. So present your presentation. Good morning to all respected leaders, Scout Guide, Rower Rangers. I am Gunjan Chobe, Unit Leader Jani Scout Dal. हमने जो एडवोकेसी प्लान और कम्युनिटी एक्शन प्लान बनाया है ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन के खिलाफ, प्लीज शेयर द पीपीटी सर. Wait, give me a time. I am sharing. Yes, जो प्लान बनाया है, जब हम कोई टारगेट लेते हैं तो पहले अपनी मजबूती को देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं. तो हमारा जो प्लान है वो है कि समुदाय को लीड करना कि वो प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करें और उनको जागरूक करना, प्रेरित करना कि प्लास्टिक के उत्पादों का प्रयोग न करें, उनकी जगह कोई अल्टरनेटिव चीज है उनका उपयोग करें. प्लास्टिक पोल्यूशन के हानि के बारे में बताना. इस संबंध में मैंने अपने विद्यालय में प्रेयर में ही हर हफ्ते एक बार प्लेस करवाता हूँ प्लास्टिक का प्रॉमिस टू प्लेनेट. कम्युनिटी में प्लेस कराई, अपने आसपास के जो वेंडर्स हैं उनको प्लेस करा के इस कार्यक्रम में हम लोग आगे अपना काम कर रहे हैं. तो जो प्लान हम लोग का है कम्युनिटी एक्शन प्लान स्ट्रेंथ. प्लीज सर शेयर द नेक्स्ट पेज सर. शेयर द नेक्स्ट पेज. स्ट्रेंथ जो रिकॉग्नाइज किया है टू लीड द कम्युनिटी. हमें अपने समुदाय का नेतृत्व करना है प्लास्टिक पोल्यूशन के खिलाफ और उनको जागरूक करना है कम्युनिटी को इस संबंध में कि वो प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करें. इस संबंध में हमने पार्क में रोड शो के दौरान स्काउट्स के चेहरे पे पेंट करा के प्लास्टिक से नहीं टू प्लास्टिक करके अवेयरनेस भी आयोजित किया था. तो लोगों को प्रभावित किया और मथुरा में प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम हो रहा है. जितने वेंडर्स हैं, वेजिटेबल सेलर्स हैं, उनसे मिला. वो कॉटन बैग जो आता है उसमें वो देते हैं सब्जी या धनिया जो भी वो देते हैं. और यहाँ गवर्नमेंट ने भी बैन करवा दिया है. तो यहाँ कम से कम प्लास्टिक चीजों का उत्पादों का प्रयोग हो रहा है. नेक्स्ट सर, नेक्स्ट. नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट. अब हमें करने के लिए सुधार. प्रॉब्लम जो प्लास्टिक का है,
कि प्लास्टिक को दैनिक जीवन नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहले अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए मैं स्वयं ये घर से झोला लाके चलता हूँ। रोज रोज जब भी निकलता हूँ घर से स्कूल आता हूँ तो एक कॉटन बैग ले चलता हूँ। प्लास्टिक का प्रयोग मैं खुद नहीं करता हूँ, इसलिए लोगों को भी प्रभावित कर सका। और वो भी हमारे मित्र हैं जो आसपास के लोग हैं, वो भी अब कॉटन बैग ही लेके स्कूल आते हैं। बच्चे भी कॉटन बैग का ही प्रयोग करते हैं, पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करते, प्लास्टिक का बोतल का भी प्रयोग नहीं करते, वो स्टेनलेस स्टील की बोतल में पानी पीते हैं। और मैंने कम से कम 60-70 जो सब्जी विक्रेता हैं उनसे मैंने मिला, 50 घरों में गया, आसपास के मोहल्ले के लोगों को समझाया टू ब्रिंग द पेपर बैग व्हेन यू गो टू द मार्केट टू बाय एनीथिंग और कॉटन बैग, और रिड्यूस करें अपने प्लास्टिक के यूज का घर में भी और बाहर से भी ऐसे चीजों का उत्पाद खरीदने से बचें। नेक्स्ट सर। जो समस्याएं आ रही हैं कि प्लास्टिक उत्पादों का दैनिक जीवन में लोग प्रयोग करने के आदी हो चुके हैं, क्योंकि ये सस्ता है, सुलभ मिल जा रहा है, लोग हाथ झुलाते चलते हैं, पॉलिथीन में लेके चले आते हैं, तो इससे प्लास्टिक पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो और इसका जो सप्लीमेंट्स है कम है, महंगा है, इस चक्कर में लोग प्लास्टिक का उपयोग डेली लाइफ में ज्यादा करते हैं, फूड पैकेजिंग में, कोई चीज सेल करने में। तो इसलिए हमें इन्फ्लुएंस करना है कम्युनिटी को पोल्यूशन के प्रति, लेकिन ये बहुत हार्ड काम है। मैंने देखा जब मैं किया था तो बहुत लोगों को प्रभावित करने में बहुत कठिनाइयां आ रही थी। तो ये इन्फ्लुएंस द कम्युनिटी इज वेरी हार्ड प्रोसेस, इस पे हमें ध्यान देना है और कम्युनिटी को समझाना है प्लास्टिक पोल्यूशन के प्रति। नेक्स्ट, इफेक्ट क्या है? मैरीन एंड इकोसिस्टम, ग्लोबल वार्मिंग देख ही रहे हैं, सोयल सिस्टम बिगड़ रहा है, जलीय जीवों के साथ साथ स्थलीय जीव जंतुओं को भी नुकसान हो रहा है, शुद्ध हवा की मात्रा, जो हवा शुद्ध है वो उतनी शुद्ध नहीं मिल पा रही है पोल्यूशन की वजह से। तो ये ग्लोबल इशू है, लोगों को समझाना है, अवेयर करना है कि वो प्लास्टिक उत्पादों का प्रयोग करने से बचें और प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें। नेक्स्ट सर, रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम, इस समस्या का कारण क्या है? प्लास्टिक का उत्पादों का प्रयोग करना, प्लास्टिक पे निर्भर होना, और ये हर जगह उपलब्ध हो जाता है आसानी से, इसलिए लोग इस प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, जो एक बहुत बड़ी विकराल वैश्विक समस्या बन गई है। नेक्स्ट सर, द इशू ऑफ द प्रॉब्लम, हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है और लोगों को व्यवहारों में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करना है कि वो प्लास्टिक का उत्पादों का प्रयोग न करें, प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में अपने भी जागरूक हो और अन्य लोगों को भी जागरूक करें। जागरूकता की कमी है लोगों में, जो अशिक्षित हैं, जो नहीं जानते कि प्लास्टिक के पोल्यूशन से होता क्या है, किस किस चीज पे ये प्रभावित करता है, उनको ये बताना, जागरूक करना, और प्लास्टिक के उत्पादों को यूज करने का जो आदी हो चुके हैं, जो हैबिचुअल हो चुके हैं, उन्हें मोटिवेट करना कि डोंट बी द हैबिचुअल ऑफ यूजिंग द प्लास्टिक आइटम्स। और जो आज की दैनिक जीवन है, जो फास्ट लाइफ है, उसमें प्लास्टिक का प्रयोग लोग ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि आसानी से उपलब्ध हो जा रही है, तो इस संबंध में भी लोगों को हमें जागरूक करना है। नेक्स्ट सर, हम लोग का लक्ष्य होना चाहिए कंप्लीट बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, फॉलो 5 आवर्स का प्रयोग करना है, रिसाइकिल करना है, रिड्यूस कम से कम प्रयोग करना है, उसको पुनः प्रयोग करना है अगर कोई प्लास्टिक हो, फिर प्लास्टिक को अस्वीकार भी करना है, रिकवर द यूज ऑफ प्लास्टिक, इनकरेजिंग टुवर्ड्स द सप्लीमेंट्स, और सप्लीमेंट्स के प्रति हम लोगों को इनकरेज करेंगे कि प्लास्टिक का सप्लीमेंट्स का प्रयोग करें जिससे कि हम अपने प्लेनेट को बचा सकें। रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक इन डोमेस्टिक लाइफ स्टाइल टूल्स। नेक्स्ट सर, हमने रोड शो करना है, अवेयरनेस रैली निकालनी है, कंपेन करना है, जहां वेजिटेबल सेलर्स हो या कोई फ्रूट सेलर्स हो या कोई शॉपकीपर्स, जहां ज्यादा मार्केट्स हो, कि लोग जागरूक हो इसके प्रति और प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करें। नेक्स्ट सर, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव टू अचीव द गोल, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या अच्छे से अच्छे उत्कृष्ट लक्ष्य होना चाहिए, तो हमें इंगेज करना है अपने को कैंपेन्स में,
किस तरह से कैंपेन करें कि लोग जागरूक हो और उसका प्रयोग कम करें। मोटिवेशन इन कम्युनिटी, अपने समुदाय, आसपास और पड़ोस के मोहल्ले के लोगों को मोटिवेट करना है, प्रेरित करना है। और दूसरी अन्य संस्थाओं जो जिला कचरा प्रबंधन है उनके साथ मिलकर, एनजीओ के साथ मिलकर हमें इस पे काम करना है। जैसे कि मैंने 2 एनजीओ से मिलकर यहाँ काम किया, ज्योति निर्मल सोसाइटी और ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति मथुरा, 2 एनजीओ को मैंने जोड़ा था। टारगेट ऑडियंस क्या है हमारे प्राइमरी में? पड़ोसी हैं, वेंडर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, टेलर्स हैं। ये हमारे प्राइमरी ऑडियंस है जिन्हें हमें प्रभावित करना है और उनको व्यवहारों में परिवर्तन लाना है। नेक्स्ट सर। सेकेंडरी ऑडियंस है गवर्नमेंट, सरकार को प्रभावित करना है, नीति निर्माताओं को प्रभावित करना है और ग्लोबल लेवल जो वैश्विक नेता है उनको प्रभावित करना है अपने एक्टिविटी के द्वारा, अपने मोटिवेशन कैंपेन के द्वारा। नेक्स्ट सर। थैंक यू। नेम ऑफ द कैंपेन, हमारे जो कैंपेन का नेम है बैन प्लास्टिक बाय BSG हीरो टू मोटिवेट द पीपल टू फाइट अगेंस्ट द प्लास्टिक पोल्यूशन। नेक्स्ट सर। एडवोकेसी मेथड में क्या करना है? हमें लॉबिंग करनी है, लोगों को जोड़ना है। जैसे कि आपको सी बीच या रिवर बैंक की सफाई करनी है तो आप आसपास के लोगों को जोड़कर वहां प्लास्टिक पोल्यूशन पे काम करें। अरेंजिंग द मीटिंग रखें, छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक पड़ोस में, मोहल्ले में, कहीं भी लोगों को जागरूक करने के लिए। एक शपथ करवाएं लोगों से, जैसे कि विद्यालय में है तो विद्यालय में, पड़ोस में लोगों को अवेयर करने के लिए। नुक्कड़ नाटक प्लास्टिक पोल्यूशन पे भी आप कर सकते हैं, मैंने भी किया था नुक्कड़ नाटक, तो आप लोग अवेयर हो सकते हैं इस संबंध में। नेक्स्ट सर। कंपेनिंग एट बिग पब्लिक एरियाज, आप स्कूल, पार्क, नगर निगम का कोई ऐसा चीज पब्लिक प्लेस ले सकते हैं जिसको आप प्लास्टिक फ्री जोन करके लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। एंगेजिंग विद स्कूल, कॉलेज, आप किसी विद्यालय से भी जुड़ सकते हैं, विश्वविद्यालय से भी जुड़ सकते हैं। जैसे मैंने तो अपने स्कूल का पार्क ही जो ग्राउंड था उसको ही प्लास्टिक फ्री जोन किया। फिर स्कूल में जो बर्ड शेल्टर है, बर्ड्स ब्रेन फीडर है, उसको भी मैंने प्लास्टिक फ्री जोन करता हूँ। वहां भी कोई प्लास्टिक में कोई चीज लाता नहीं है। डिजिटल कंपेनिंग में आई मेड द डिजिटल पोस्टर, आप डिजिटल पोस्टर आप बना सकते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन को प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, इसके खिलाफ कम्युनिटी को अवेयर करने के लिए। शेयरिंग द पोस्ट रिलेटेड टू द कम्युनिटी, वर्किंग ऑन द प्लास्टिक, मेकिंग डिजिटल पेटिशन। आप इतना चीज कर सकते हैं, जैसे कोई प्लास्टिक एक्टिविटी करिए आप, यू हैव टू शेयर ऑन फेसबुक, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब टू अवेयर द पीपल। प्रॉब्लम वही सिंगल यूज प्लास्टिक का ही है। सिंगल यूज प्लास्टिक लोग एक बार यूज किए फिर फेंक देते हैं, जिससे कि पोल्यूशन ज्यादा बढ़ता है। एविडेंस का है, प्लास्टिक हर जगह मिलता है आपको। रिवर बैंक, नदी किनारे जाइए, समुद्र किनारे जाइए, पार्क में जाइए, तो यहाँ लोग क्या है कि प्लास्टिक को जैसे तैसे फेंक देते हैं, जिससे कि पोल्यूशन बढ़ता है। जल में जो है प्लास्टिक की मात्रा बढ़ती है, थल पे भी प्लास्टिक की मात्रा बढ़ती है, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक है। नेक्स्ट सर। रेलवे एक्शन रिक्वायर्ड। अब हमें करना क्या है? हमें जागरूक करना है लोगों को, प्लास्टिक के हानिकारक दुष्प्रभावों के बारे में बता के लोगों को जागरूक करना है, उनको इंस्पायर करना है, अपने समुदाय को, अपने पड़ोस के आसपास के मोहल्ले को, और एक्शन कार्य में लाना है कि प्लास्टिक का उत्पादों का प्रयोग कम से कम करें और पर्यावरण की रक्षा करें। थैंक यू। ओके, हाँ, ओके, थैंक यू। Thank you so much, sir. Gunjan Chaubey, sir, from Northern region. Such a wonderful experience you have shared. और आपने कितने अच्छे से बताया कि आप हमेशा अपने पास एक बैग लेके जाते हैं। It's a good idea कि जब हम खुद कुछ करेंगे तभी ना लोगों को कुछ समझा पाएंगे जी। तो पहले स्टार्टिंग खुद से करना है। Thank you so much. Thank you. Now it's a time for room number 4. Now next get ready, room number 5. Room number 4, please present your presentation.
Yes. Good morning, everyone. Training of advocacy campaign. Our project name is Plastic Free India. Next. Yes. In my introduction, my name is Mamta Nixon Morais, Kalpana Chawla Guide Company. I'm PLT guide from St. Vincent de Paul High School, Thane, Maharashtra. Next. Mamta madam, the screen Yes, is sir. not visible, I think. It's not visible. Yeah. Okay. Screen is not visible. Now it is visible. Yes, ma'am. Okay. Go on the banner again. Yes. Good morning, everyone. Training for Advocacy campaign. Our project name is Plastic Free India. My introduction. My name is Mamta Nixon Morais from Kalpana Chawla Guide Company, Realty Guide Captain, Principal of St. Vincent de Paul High School, Thane, Maharashtra. Video. Okay, I would like to share one small video with you all. Whale tail. Is the screen visible? Make it big. Hope you like this video. Now, our topic is action plan. In action plan, we have objective,
communication, executing the plan, and planning. Reaching smart objective to achieve the goal, reaching community, working with local corporation officials, politicians, reaching locals, citizens, organizing campaign. Sorry, ma'am, for interruption. Your screen is not visible. Not visible. Okay. No, ma'am. Now it is visible. No, ma'am. Now it's visible. Carry on. Okay. Smart objective to achieve the goals. Can you go back? I think they missed the. Yeah, from here. Our action plan is objectives, communication, executing the plan, and planning. Smart objective to achieve the goals, reaching community, working with local corporation officials and politicians, reaching local citizen, organizing campaign. Goals, complete ban on plastic, reach local citizen at large, working with officials to educate citizen in plastic waste segregation, to involve everyone in this project. Now, these are a few programs which we have organized, which were organized by our unit. Power of Press, where children, they approach social media, and there were whatever work, social work is done by our guides and scouts. It was published in the newspaper. Knock at the door, organized paper bag distribution. In this project, students of our school, they made handmade paper bags, and those bags were distributed to local shopkeepers. And we encourage them to use paper bags and stop uses of plastic bags. Road shows were organized. Topic was say no to the plastic. And painted. We had an activity where girls painted their face with the message say no to plastic. Action, we have to, if you want any change, you should begin with yourself. So we have stitched this cloth bag with a old t-shirt. Convincing shopkeeper to find alternate use of plastic. We went door to door, shop and local shopkeeper, and we presenting them this plastic bag. Paper bags. Madam, the slide is not moving. Madam. Not moving. Now it is come. It is seen. Okay. Now small tidbit. Collecting this is our this school program, wherein every 3 months we have this bin where plastic is collected by our students and it is handed over to local corporation, and there it is recycled. Beach please. This is again another this project where a student we come together and go to clean the beach, especially mangrove areas. Promise the planet. Thank you so much, ma'am, for such a lovely presentation you had shared with us. It's a nice presentation and nice story you had shared. Now, Thank you. Thank you. Now I would like to room number 6. Please present your presentation. Room number 6, please present your presentation. Room number 6, Devjyoti. Yes, sir.
Sir, PPT, please. So good morning, all of you. Myself Debojyoti Das from Eastern Region, Eastern Region of the Bharat Scouts and Guides. तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से बहुत धन्यवाद हमारे एक्शन प्लान आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए हमें मौका मिली है। तो सबसे पहले हमारे जो एक्शन प्लान है वो एक्शन प्लान के स्टेप 1 है स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे सबसे पहले हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि हमारे अंदर में क्या-क्या स्ट्रेंथ रहता है। तो इसमें हमने रिकॉग्नाइज किया कि हमारे अंदर लीडरशिप, पैशनेट, टाइम मैनेजिंग एंड एम्बिशियस ये 4 पॉइंट्स हमारे पास है। हमारे ये स्ट्रेंथ है। उसके बाद हमें देखने पड़ेंगे कि हमारे बीच में हमको क्या-क्या डेवलप करना पड़ेगा, हमको क्या-क्या इम्प्रूव करना पड़ेंगे। तो वो है कि इवैल्यूएशन, क्या प्रोग्राम हम कर रहे हैं हमारे गोल को अचीव करने के लिए, तो उसको इवैल्यूएट करना, पब्लिक स्पीकिंग, किसी जो लोग से जाके बात करेंगे वो लोग के साथ बात करने की तरीका है, मॉनिटरिंग एंड फंड रेजिंग, प्रोजेक्ट करने के लिए हमें जितने भी पैसे चाहिए, जितने भी सपोर्ट चाहिए उसके लिए। नेक्स्ट है स्टेप 2 द प्रॉब्लम। तो हमने प्रॉब्लम सिलेक्ट किया है प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि प्लास्टिक पॉल्यूशन में हम लोग का क्या-क्या प्रॉब्लम है, इफेक्ट्स क्या है। इफेक्ट्स में है प्लास्टिक पॉल्यूशन टेक्स लॉन्ग टाइम टू डिकम्पोज। हमारे ये जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है इसमें जितने प्लास्टिक्स हम लोग यूज करते हैं ये डिकम्पोज होने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। ये हमारे वाइल्ड लाइफ को बहुत हार्म पहुंचाता है, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे एक बहुत बैड एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहाँ पे हम लोग रह नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत दिक्कत होता है। और प्लास्टिक हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग है, ये जमीन की मिट्टी के साथ मिलता नहीं है। हम लोग का ये प्लास्टिक पॉल्यूशन का मेन कारण क्या है? यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज करते हैं जो हम लोग का नेचर के लिए बहुत ही हानिकारक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ रिसाइकलिंग। हम लोग जो प्लास्टिक यूज करते हैं उसका रिसाइकलिंग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बस खाली वो रह जाता है। What is the plastic? Thank you, Debojyoti, for such a wonderful things you had shared with us. It's a nice experience, nice judgment you had done. Thank you so much. Now, hand over to Tejashwini. Over to you, Tejashwini. Thank you so much. So, that's a really very informative presentation all of them have shared. Moving on, knowing is not enough. We must apply. Willing is not enough. We must do. The hero level of Plastic Tide Turners Challenge focuses on advocacy and called Wave Makers. The Wave Makers level involved 2 weeks of intensive advocacy training with each participant training 4 of their peers to join them. To know more about this, I would like to welcome the one who supported girls in girl-powered nutrition as a country project manager in Scottish Mazazavavi, Malagasy, and also coordination of advocacy champions of girl-powered nutrition. She is the program manager at UN Challenge Batch Program Manager at WAGS. Yes, she is none other than Roso Andrea Mahari ma'am. Along with her, I welcome the one who has an educational background in management and have a vast experience in project coordination, previously working with International Aid Services and Tuzuki's initiative. An advocacy champion from Kenya. She is none other than Pamela Kiambi ma'am. I heartily welcome you both. Over to you, ma'am. Hello, can you hear me? Yes, ma'am. Yeah, thank you very much. I would like to make some comments first
on all the presentations. And thank you very much for all your great work. We can see that we can see your hard work. And yeah, thank you very much for this. So I would like to say that from all the presentations, I could see that you already are a great team, and you have strength. And I like also the fact that you are looking for alternatives for plastic. And so this is really good. And the fact that you were doing research, this is really good as well. So thank you very much for the hard work. So I would like to give some comments. Maybe like let me share my screen for this. For the SMART objectives, you know, I've seen all your objectives, and I think the objectives need to be you will need to work on the objectives. So as we've said, it needs to be smart. It needs to be time bound. So you need to give more specific precision. For example, for the time, you need to put the deadline you set for your campaign objective to be reached. So in this example, for example, you have 1 year from now here. So you will need to put in the objective, the time. You need to set the time, and you will need to also to give more specific information, like how many people do you want to reach. You said reach among community. Where are those community? Organize the campaign. How many campaign do you want to do? And the other comments is the primary, the audience. The audience, if we are talking about advocacy, we would need to put decision makers as our audience. So just to remind this. And third comment is on lobbying. Some of you has talked about lobbying, and this is one of the methods we are using in the advocacy in an advocacy project. So these are the types of lobbying. Lobbying is first. Lobbying is first. It is all about interacting directly with decision makers. So it's all about timing, connection with the right people, persuasion, and holding leaders to account. So these are some example of lobbying, like phone call, sending your position statement on your advocacy issue to the right people, writing a letter to the right people. And so it's not like making poster or something like that, but exactly talking to the right people. Okay, so thank you very much for your hard work, and I'm looking forward to the implementation of those projects. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for lovely things you had shared with us. Thank you so much. Plastic is the most destructive weapon than a nuclear bomb or an atom bomb. Its impact shall remain for centuries on the future generation. So now it's the time for breakout room. Now I would like to request
all the participants get ready No, for Sangeeta, breakout. sorry for interruption. Rojo madam will take a session on WebMaker. Yes, yes. So these are, sorry. Yeah, sorry. These are the comments on your presentation or your advocacy project. Thank you, Sanghmitra. But now let's see our presentation for peers training. Okay. Let me share my screen. Can you see my screen? Yes, ma'am. Okay. Thank you. So, as we've said yesterday, we are in the training. We are doing training of advocacy champions and peer trainers. So today is the second part of this training. That means the training of peer trainers. So the objective is for you to know what is peer-to-peer model, who is a good facilitator, and how to write a session plan. And the last point is for you to build confidence. Let me remind you the brave space rules we have shared yesterday. So we are curious, we listen to each other, we include everyone, we don't judge other people, and we encourage each other to ask questions. So now I would like just to, I hope you are still ready. So just a team check-in. Choose an emoji or GIF or image that best represents how you feel at the moment. How are you feeling? Just put those emoji in the chat box while we are continuing the presentation. Okay, so choose an emoji that best represents how you feel at the moment. So yeah, send it in the chat box. Type in the chat box. But now let's watch together this video. This is a very inspirational video, so I invite you to enjoy watching this. नहीं होगा यार। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर ये चल चल क्या बात करता है क्या ऊपर से जाएगा क्या ऊपर से जा जा गया मीशो I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा? कैसी जाने बूंदे आई जाने कैसा दर्द लाई सामने क्या है ये तेरे क्यों रुका है तू बता रे हो को पार ले कौन का वो मसीह तू ढूंढता है तुझ में तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा
रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। जिसे ढूंढता है तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे तेरा मसीहा हो। Yeah. So I hope you've been inspired from this video. How do you feel after watching this one? What you learned from it? Yeah. Can I have some vote in the chat box? Yes, good. Very motivational. Yeah. Somebody has to go first. You have to take a lead. Don't wait for others. Yeah, we need to work together. Yeah, you're right. This is a very inspirational video, and we can have those 4 main points when we want to recruit other girls or boys to join our campaign. So you will need to lead by example. It is most attractive to other people if the leader is practicing what he or she is advocating for. Through your consistency, girls and boys are able to pinpoint that you are someone who is passionate for this cause and someone that they would like to follow, like these little boys, like this little boy. And the second point is action speaks louder than words. Similar to the point above, it is important that you show your commitment to your advocacy through action. Like what the boy did in the video, he showed that he is committed in removing the tree that is blocking the road. And the third point is focus on the solution. The boy did not look at what other people are doing or not doing. Instead, he focused on what can be done, and he initiated in contribution to the solution. And the fourth point is do not minimize yourself. You can do anything. The boy did not look at himself as just a child, but instead he believed in himself, and as a result, he was able to recruit others in removing the tree. And you can see at the beginning of the video that he could recruit his peers. We could see the children who go to the tree to help him first. So yeah, all those points can help you to recruit your peers. But what is peers? What does it mean? What does it mean peer-to-peer model? So we can give this definition. A peer is a person who belongs to the same social group as another person or group. The social group may be based on age, gender, occupation, socioeconomic, or health status, and other factors as well. So your peer is the person at school, in your community, the same age of you, for example, or the group of girls in your community, group of boys in your community, for example. So this is what we call peer. So now let's have a short game. And please, we have many symbols here around this slide.
You can choose from them. You can find another symbol as well. But what I want you to do is to take one symbol of things you have learned from your peers. So you take one symbol that symbolize one thing that symbolize what you have learned from your peers, one negative and one positive. Okay, so I will give you a few seconds to take from those small pictures and that symbolize what you have learned from your peers, one negative and one positive. Okay, so a few seconds. Do you understand what I mean? Yes. Yeah, I can see already answers here. Sangmitra is taking the clock. We should value and respect our time. So she has learned from her peers time management. Yeah. Yeah, we can see as well the Besish who learned angry or negative things from his peers. And for positive, recycling. Yeah, he has learned from his peers how to recycle. This is good. Yes. That's great. Plant more trees. Yeah, I think this is positive things you have learned from your peers. Symbols of time and recycling things for positive for Shubham. And for the negative, this angry emoji. Yeah. So let's go to the next game. This is still a short game, but this time it is you influencing your peers. Think about your positive influence and negative influence. So you influencing your peers to do or not to do something. The first game we had is peers influencing you, but now it's you influencing your peers. Okay, so yeah, let's see that in the chat box. Education will give values and respect. Yeah, save tree, save water, positive. What you did to influence your peers to do or not to do something. Positive influence, recycling, more plantations, recycling, plant trees and avoid plastics, say no to single-use plastic. Yeah, I see it's all related to plastic. So, and environment, educate to save environment, to make in management. Yeah, you can still continue to share this. But what we want to say is that we all influence people with positive and negative effects, and there is no harm in learning from both. Peer influence is a mutual process in which everyone can be influenced and in turn influence others. And this is one of the reasons why peer-to-peer methodology is used and is effective in a behavioral change process and in influencing decision makers. Okay,
So this is all about what is peer. Now, I invite you to go to this slide, to this AHA slide, and answer this question. Who is a good facilitator? What is a good facilitator? Please join me in the AHA slide. Let me share this in the chat box. Please join the link. Okay, and let's answer this question. Yeah, the question is mainly, what makes a good facilitator, a co-facilitator? Let me share this. Yes. Yeah, I can see some participants in the what makes a good facilitator and a co-facilitator? Leadership, listener, yes. What else? What makes a good facilitator and a co-facilitator? As you are going to recruit other peers and also to help them know about what you are, what you know, what you already know, like what is advocacy, what is peer, what is plastic tie turners. Yeah, always ready to help, encourage. Yes, a good facilitator, encourage and motivate. Yes. Good facilitator is hard work. It's a leader, smart. It is a motivational personal. It has to have a motivational personality. Communicate. Good communication skill. Yeah, support. Yes, creative. Yeah, thank you very much. So, yeah, thank you for your answer. Yeah, the work of the facilitators is the objective to be a facilitator is to share what you know, and also to help the others to get the information you want to share. Yeah, and so there are things that need to be done, or when you are facilitating. So you would need to be clear. And when you are co-facilitating, you need to contribute to the leadership of your co-facilitator. You give him or her space to lead as well. You need to be punctual. You need to begin and resume the session on time. You need to compliment. You need to compliment your co-facilitator and also compliment the participants as well. And you need to have a positive and supportive relationship with each other. So these are for facilitating. And when you are facilitating, you need to be prepared. You need to be prepared. This is one of the important point for a facilitator. So you need to be prepared and prepare a training session plan. So a training session plan is it is a learning. It is called also a learning plan. It is also called a learning plan, and it has the learning plan. It has the details of the activities
and resources to achieve training, to achieve the training objective. The details, it gives also the details of subject matter, the duration, instruction methods for each section. Why do we use a training session plan? Why do you think we need to use a training session plan? So as a facilitator, you will need to use a training session plan. Okay, so can you give me an answer in the chat box? Why do we need? Are you still here? Yeah? Yes? Why do we use a training session plan? Can you give me an answer for that? Yes? To enhance, to get more knowledge. This is why does the facilitator use a training plan, a training session plan? Yeah, presentation of the subject, so things run smoothly. You're right. Yeah, this is a matter of planning, part of preparation, and be clear. Yes, it helps us facilitate others timely. That's right. Yes, yes, you're right. So we need to use a training session plan to determine, to teach everything what you plan to present, and to present information logically, and to prepare information logically, to prepare for points that attendees may find difficult, to work out what went well and what didn't, so that you can plan better and adapt for future training. So this is the reason why we are using a training session plan. And how to develop a session plan. This is not really difficult. You will need to find out your learning objectives, like what we have presented at the beginning. So you will need to find out your learning objectives, one or two. So this is what to achieve at the end of the training. This is very important because you can measure if the participants have understood correctly or not at the end of the training from these learning objectives. And you need to limit the learning objectives to only one or two, so that participants are not overwhelmed with information. And you will need to clarify key topics and related concepts as well. You need to focus on the very key and central ideas. And the third point is in the session plan, you put all the materials you need. Yeah, you need during the session. You need to be prepared, for you to be prepared. And these are some presentation techniques that you can use when you are doing a session, when you are leading a session. So these are, you need to think on several presentation approaches to keep participants active and engaged, such as instructor-led training, e-learning, like what we are doing now, using internet and computer, using applications like Zoom or Google Meet, or something like this. And also we have another technique is the simulation employee training. This is used for reproducing real scenarios, for example, fire fighters or flight simulation. And you can use as well lectures or group discussion and activities, and also role playing. So these are presentation techniques that you can use when you are facilitating. And when you are in your peers,
So you can use those techniques. And you will need to when you are a facilitator, you will need to build skills as well. You know that from various studies, we have seen that knowledge alone does not lead to behavior change. Most people know, for example, that cigarettes can cause lung cancer, but that does not necessarily keep them from starting to smoke or continuing the habit. So activities that only impart information should not dominate in a training program. Knowledge is only a base upon which to build positive skills, attitude, and values. So you will need to keep in mind this information that knowledge alone can lead to a behavior change. These are for an advocacy champions. These are building skills related to you. This can be public speaking, networking, time management, project planning, coordinating meeting, and many of the skills that you will use throughout your campaign are skills you already have from other areas of life. For example, organizing and time management, negotiating, writing for different audiences. All of these skills can be developed and strengthened through your advocacy activities. And yeah, so before influencing peers and decision makers, you will need to develop important life or behavior skills, such as what I've shared you earlier. So as I've said, many of the skills you already have it from other areas of your life. So think about the individual skills and strengths you recognized in yourself or in your friend. Take time to fill your backpacks with the skills that an advocacy champion needs to have that are useful for your advocacy campaign and that you still need to develop, and the other one with the skills that you already have. So we have two backpacks here. So this one you fill with what you need as an advocacy champion, and this one you fill with what skills you already have. Okay. You can have this reflection at home, but also you can share. You can begin to share in the chat box as well what skills you already have, so that you can excel in your advocacy work. What skill you already have, or what skills do you need to do your work as an advocacy champion? Yeah. Leadership, time management. Yeah, these are skills that you need. You may already have. Yes, discipline. Yeah. So punctuality, yeah, you really need that. Coordinating. You can take example of the awareness, organizing. You can take example of these skills that advocacy champions
should have: analyzing skill, time management, campaign management, confidence. Yeah, you need to have confidence when you want to talk to others, especially if you want to target decision maker, if you want to influence them to take a decision on your issue. So yeah. So I encourage you to take some time to reflect individually, and also to share within your group, and to find time to build skills within the group. And I would like to share with you now the task, your task during the breakout room. So you will have to develop a session plan. So your session plan should include what is wave makers, hero level of plastic tie turners, what is care-led advocacy, what is advocacy, how to develop an action plan using Works Advocacy Toolkit. So the objective for you in this session plan is to have everything organized in a plan, and for you to be prepared to share this session to your peers. Okay. Okay, so now I would like to end my presentation with what motivates me. Why do I share this with you? Because you will need to think about what motivates you. If sometimes you want to give up, think about what motivates you to do this work. So personally, for me, what motivates me in this work, I've been a member of Girl Guiding since I was 9. I'm passionate about giving girls and young women a platform to learn, develop, and share. Not only girls and young women, but young people. And I would like to give as well. I'm motivated to give back to an organization to help make a positive change in the world, to share my skills and knowledge, to learn new things as well, because when you are facilitating, when you are talking to your peers, you are learning new things from them as well, and also to connect with others. So think about what motivates you personally, and remember your motivation when sometimes you want to give up, when you are tired. So think what motivates you at the beginning. So yeah, thank you very much for your attention. If you have questions before your breakout room, then we are here, me and Pamela, we are here to answer you. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you so much for a lovely session you had taken for wave makeup peer training. Thank you so much, ma'am. It's a so interesting session, and everybody had participated and we had enjoyed a lot. Thank you so much, ma'am. Now I would like to request Himanshi Tomar ma'am for further information she will give us about this uh, advocacy champion. Please, ma'am.
Thank you so much, Sanghmitra. And Rojo, thank you so much. You have already explained so well that what our peer trainers have to do in the breakout room. But just to give you a more just about what you guys will be doing in the breakout room, आप सभी के पास बहुत ज़्यादा नहीं, but you guys would be having 20 minutes. कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की जगह आप एक ही किसी पर्टिकुलर फोकल पॉइंट को पकड़ के जो जो आपके ओपिनियंस है बताते जाएं, एंड वन ऑफ यू कैन चूज टू राइट ऑन द वर्ड डॉक्यूमेंट whosoever has a laptop in the team. और उसमें ध्यान रखें that you, as Rojo just mentioned, that you have to make sure that you are discussing over what is wave makers. आपको उसी तरह सोचना है जिस तरह अभी रोजो ने आप सभी को फैसिलिटेट करके ये ट्रेनिंग दिया है, वैसे ही जब आप अपने पीयर्स के पास होंगे जिन्हें आप ट्रेन करने वाले हैं, उन्हें आप क्या क्या ट्रेनिंग देंगे. Also, I'm sure that you guys would have the advocacy toolkit with you, which is prepared by Vex. So do take a note from there. I would request whosoever is taking a lead in the room, वो इंश्योर करें कि उस टूलकिट को आप थ्रू आउट द ब्रेकआउट सेशन ओपन रखें और उसमें से की पॉइंट्स लेके कि आपको अपना जर्नी कैसे शुरू करके कहाँ पे एंड करना है वो ध्यान रखें. और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज होती हैं, then we have the leaders in the breakout rooms. You can ask them, and we will also be coming in the breakout room and making sure that you guys are doing okay in there. I hope sabhi ko ye clear hai. Before we go in the breakout room, anyone has any question related to the action plan which you have to make on the session? किसी की भी कोई भी queries है, they can raise their hand or maybe write in the chat box. Yes, Nikhil Sureshji. So I would request either to please unmute Mr. Nikhil Suresh, or you can write in the chat box for us. Thank you. जी निखिल जी बताइए. By mistake, the hand was up. Okay, no problem. I'm sorry. No problem. So it seems कि सभी कुछ समझ आ गया है, and let's, without wasting any time, let's run to the breakout rooms. Over to Sanghmitra now. Thank you, Sanghmitra. Thank you, ma'am. Now it's a time for breakout room.